A very good morning and Jain, my dear students. So, how was your test? Unit test 2? I hope that you have given it properly and you have done good in that, right? So, now today we are going to start a new chapter, that is shapes and pattern. Okay, so let's start. So, as the name suggests, shapes and pattern. Here we are going to study about the shapes that you have already studied in geometry. So here we are not going to study about the solid shape or basic shape. Here we are going to study about the symmetry. What is symmetry? What is line of symmetry? And different kinds of pattern. Now what is pattern? There are many kinds of pattern. There are some pictorial patterns. There are some we can say like this, like in our all the clothes you must have seen there are some pattern, like see यहाँ पे जैसा pattern है, it has been followed everywhere, right? So if we talk about numeric pattern, so different kind of patterns are there. If we talk about giraffe and zebra, they have ऑल्सो यूनिक पैटर्न. हम उसी पैटर्न के थ्रू उन्हें हम आइडेंटिफाई करते हैं, राइट? सो वो जो उनके बॉडी में डिज़ाइंस होती हैं, जो कलर कॉम्बिनेशन है, उसके थ्रू हम उसको पहचानते हैं एंड इट फॉलोज इन सेम. सब में ऐसा ही होता है. अब ऐसा तो नहीं है जिब्रा में ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप होती है तो बॉक्स किसी में बना, ऐसा तो नहीं होता. इट मेक्स द सेम. लाइक जिराफ में जैसा पैटर्न है, सभी जिराफ में वैसा ही पैटर्न होगा. सो दीज आर कॉल्ड पैटर्न, जो एक ही चीज फॉलो हो सब में, राइट? सो नाउ यू मस्ट हैव सीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ साड़ी जिसमें अगर ब्लॉक प्रिंटिंग की हुई है तो हर एक थोड़े थोड़े गैपिंग में की गई है. सो दैट इज कॉल्ड पैटर्न. उसको बोलते हैं पैटर्न, राइट? एंड शेप, यू नो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, right? So all these shapes you will be studying for symmetry. आपको हर एक शेप में सिमेट्री कैसे बनाना है, that you are going to learn in this chapter, right? So before starting the warm up exercise, let's start. First of all, write the definition of symmetry and line of symmetry in your notebook. So everyone, first of all, take out your notebook. Then we will be doing the book work. Alright, so first of all, take out your notebook, everyone. Now, let's start doing the work. First of all, everyone, write down in your notebook lesson number 7. Write like this, lesson 7. And the name of the chapter is Shapes and Patterns. Now what is pattern? I have already told you. What is shape? You all know. So I'm not going to give you the definition of shape and pattern. You have to write the definition of symmetry and line of symmetry. So after writing this heading, put date over here in the corner and then write the definition of symmetry. What is symmetry? सबसे पहले आपको definition लिखनी है symmetry की. So write down. Heading will be with the black pen and the other part will be with the blue pen. Don't forget that. Okay. So start writing. The state of having. I will be showing you कि symmetry होता क्या है और कैसे आप identify करोगे, right? I will be showing you in a demo right now. The state of having two halves that match each other exactly in size, shape, etc, etc. Okay, this is the definition of symmetry. Symmetry क्या होता है? The state of having two halves that
match each other exactly in same size and same shape. Exactly the same shape and size. How? I will be showing you in the demo. First of all, just write it down, the definition of symmetry, and then you have to write the definition of line of symmetry. After that, leave a line and then write the heading line of symmetry. Alright, line of symmetry with the black pen. And the definition is the two halves, the two halves are mirror image, are mirror image. ये जो सिमेट्री होता है इट्स एग्जैक्टली द मिरर इमेज, मतलब एक साइड जैसा दिख रहा है वैसा ही सेम दूसरा साइड भी होगा, राइट. मिरर इमेज मीन्स एग्जैक्टली द सेम. ओके, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, of each other. Now you can see the lines. The fold is called, the fold is called the line of symmetry, the line of symmetry. This you need to write down in your notebook. So first of all, you have to write the definition of symmetry, and then you have to write the definition of line of symmetry. You will get the PDF, so no need to worry about. But as I have written here, so if you want, you can note it down right now. So what is the definition of symmetry? The state of having two halves, though half, that match each other exactly in size, shape, etc. Okay? And then line of symmetry. The two halves are mirror images of each other. The fold is called the line of symmetry. Now I am going to give you one more definition of line of symmetry. Right? I am giving you. So you can write there और, उसके नीचे आप और लिख के फिर से line of symmetry के एक और definition लिख सकते हो. The line of symmetry, whatever you feel like easy, you can understand. दोनों की meaning is same. Okay. The line of symmetry is the imaginary. Yes, it's very important to know. It's an imaginary line. I will be showing you this imaginary line where you could fold the image, and have both halves match exactly. Okay, match exactly. Now below this, just draw one example. Okay, I'm just drawing example. You can draw like this. Draw the alphabet A like this. Draw the alphabet A. Clear? Just draw it. I'm drawing it again so that it will be the straight line. Yes. Now what is symmetry? Symmetry means when imaginary lines comes there, when we join it with a dotted line, then it makes the image two halves. दो half में divide करता है, or we can call it, it's a mirror image. That is called symmetry. So now अब यहाँ पे आप स्केल और पेंसिल के थ्रू यहाँ पे आप एक कैसे डॉटेड लाइन इसको हाफ बनाएंगे. राइट, यू हैव टू जस्ट मेक इट हाफ. राइट, you need to just make it half. How to do? You can see here, I'm showing you again. I'm showing you different examples. Okay, now see here, you can make any example. Like for example, this was A. ठीक है, ये A है. अब आपको स्केल और पेंसिल के हेल्प से इसको बीच से हाफ करना है. राइट, अब सी हियर, व्हेन वी आर डूइंग इट हाफ, अब दोनों साइड क्या है, इक्वल.
एक जैसा है ना, सामने सामने. नाउ इफ आई टॉक अबाउट, आई एम शोइंग यू अ फ्लावर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ फ्लावर. अब इसे हमें अगर डिवाइड करना है तो हम ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, राइट, एंड लाइक दिस ऑल्सो. सो उनको हाफ करना है, एग्जैक्टली सेम बनाना है. इफ इट इज अ ट्रायंगल लाइक दिस, so we can make it like this, right? So you have to just make the half, उसको mirror image में आपको convert करना है. So just draw one example. That is your notebook work. First of all, you need to write down the chapter name, lesson 7, shapes and pattern. Then you have to write down the definition of symmetry, then line of symmetry, and there is one more definition of line of symmetry which I have written here. The line of symmetry is the imaginary line where you could fold the image and have both halves match exactly. Now I am showing you how this works, कैसे ये work करता है, right? I hope this much is clear to you all, right? Now let's watch what is symmetry. Now for example, I have taken this rectangle shape. ठीक है, मैंने एक rectangle shape का पेपर लिया है. Now you have to understand what is symmetry. Symmetry means making the mirror image or making the object in two halves. ठीक है, whenever you are making it, remember that. See, अब जब मैंने ये जो लाइन बनी ना, सी ये जो फोल्ड दिख रहा है आपको, दिस फोल्ड इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री. दिस वी रिप्रेजेंट, जब हम नोटबुक में रिप्रेजेंट करते हैं या बुक में, विद अ डॉटेड लाइन. हम ऐसे तो फोल्ड करके दिखा नहीं सकते, तो वी मेक इट विद द डॉटेड लाइन. सो दिस इज योर लाइन ऑफ सिमेट्री. नाउ अब रेक्टेंगल में ये एक फोल्ड हो गया, हम इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं. यू कैन सी ये एग्जैक्टली सेम है, इधर से एंड इधर से कहीं बाहर नहीं निकला है. नाउ इन रेक्टेंगल शेप देयर आर टू लाइन ऑफ सिमेट्री. कैसे? दिस इज द वन. ओके, नाउ आई एम शोइंग यू द डिफरेंट वन. अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे. यू कैन सी ये अभी फिर एग्जैक्टली फोल्ड हो गया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं निकला है, राइट? So now you can see there are two line of symmetry. You can see this dotted line over here. ये जो imaginary line है 1 and this is 2. So this is representing line of symmetry or it is making the exact half. Exact half, right? कुछ भी बाहर नहीं निकला है. It's a exact half. You can see in both ways, right? Now if we want to do it diagonally, अगर हम इसको diagonally fold करना चाहें तो क्या ये होगा? No. See, it's not covering all parts, so no, it has only two line of symmetry. You have to understand that how many line of symmetry are there in different shape. So we will be doing that also, so no need to worry about. I will be telling you of square, rectangle, circle and triangle. There are three types of triangle, that also I will be discussing but later on. Okay, so you know about the rectangle. Now I'm showing you with the help of this circle. Okay, I'm using this circle. Now see, we can fold like this. See, now it's a exact half. ये हो गया वन फोल्ड. ठीक है, यू कैन सी द फोल्ड. आपको दिख रहा है ये फोल्ड, राइट? ये एक फोल्ड दिखा. Now I can make it like this also. So now you can see total two folds, 1 and 2. Now I'm making more. See, we can make it lot of in the circle. Circle में होते infinite. कितने होते हैं? Infinite means you can't count. जितना चाहो आप उतना फोल्ड करते जाओ, हर थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे फोल्ड करोगे तो इट विल बी ऑलवेज एग्जैक्ट द सेम. यू कैन सी मैंने कितने लाइन ऑफ सिमेट्री बना दिया, राइट? सो दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री इन सर्कल. सर्कल में कितने होते हैं? अनलिमिटेड. नाउ इफ यू वांट टू मेक लाइन ऑफ सिमेट्री इन स्क्वायर, देयर आर 4 line of symmetry. Okay, I don't have these shapes right now. I will be showing you later on जिस दिन हम notebook work करेंगे. All right. So there are 4 line of symmetry in your square shape, 2 in rectangle, infinite in circle and triangle में जो मैं 3 types पर आऊँगी उसके according आपको मैं समझाऊंगी. अभी नहीं समझाऊंगी. It will be मतलब अभी नहीं.
So it will take time. So this much you have understood what is line of symmetry. Line of symmetry means the imaginary line or the dotted line जिसकी हेल्प से हम किसी भी इमेज को टू हाफ्स में या मिरर इमेज में कन्वर्ट करते हैं. वी मेक इट. So let's do the book work today. All right. All of you open the warm up page, that is on page number 129. Everybody take out your books. Page 129. Now see, this is your warm up exercise, page number 129. Now in this you can see warm up, the Taj Mahal, the Golden Temple. Look at the following figures. यहाँ पे आपके दो मॉन्यूमेंट्स दिए हुए हैं एंड यहाँ पे लिखा है दीज मॉन्यूमेंट्स लुक ब्यूटिफुल बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्री. ना हाउ कम सिमेट्री? लेट मी शो यू हाउ कम सिमेट्री. नाउ सी दिस ताज महल, ये एग्जैक्टली सेम है इधर से इधर तक. तो अगर हम इसको चाहें तो ऐसे डिवाइड कर सकते हैं इक्वली, राइट? क्योंकि इधर का पार्ट और इधर का पार्ट दोनों एग्जैक्टली सेम है मिरर इमेज की तरह, राइट? In Golden Temple also you can divide it from the middle because they both side क्या है exactly same, right? Whenever you are making line of symmetry, use scale. Okay, see here line of symmetries are drawn in these figure. You can see here कैसे बनाया हुआ है, dotted line बनाई गई है, exact straight है ना. So with the help of scale. Now look at the following figures. When folded on the dotted line, the two halves match exactly. जो मैंने अभी दिखाया exactly same. These figures can be divided into two parts of equal shape and size. Such figures are called symmetrical figure. उसको बोलते हैं symmetry, जो अभी मैंने definition आपको लिखवाई है. The two halves are mirror image of each other. The fold is called the line of symmetry. Right? ये जो fold होता है उसको बोलते हैं line of symmetry. Now let's do the question number A and B. Now question A बोल रहा है color the symmetrical figure. अब इसमें से कौन कौन से फिगर पहले तो हमें आइडेंटिफाई करने होंगे जो सिमेट्रिकल है. Now if we talk about this cup, क्या ये सिमेट्रिकल है? अगर हम इसको यहाँ बीच से हाफ करते हैं तो क्या ये सिमेट्रिकल होगा? No. क्यों? बिकॉज यहाँ पे क्या है, हैंडल है और यहाँ पे हैंडल नहीं है. So it's not symmetrical. ठीक है, ये सिमेट्रिकल नहीं है. सो यू कैन जस्ट क्रॉस इट लाइक दिस. नाउ इफ यू टॉक अबाउट सेकेंड फ्लावर, सो येस यू कैन सी हियर, यहाँ पे हम इसको एग्जैक्टली हाफ कर सकते हैं विद द डॉटेड लाइन विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड हियर ऑल्सो. एंड जस्ट you have to color this second one. You have to color second one of any choice. It's your choice. Let me do with red. I'm doing it with red. So you have to just color it because it is symmetrical. So you need to color it with pencil color in your book. Just do it. Okay. So you need to color second one. Now third tree. Will it be symmetrical? I'm showing you. अगर मैंने इसको exactly ऐसे हाफ किया तो क्या ये symmetrical है? No. Why? Because यहाँ पे ऐसे दिया है, इसकी जड़ें दी है और यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, राइट? यहाँ पे देखो ब्रांचेस कैसे दिए हैं. सो इट्स नॉट सिमेट्रिकल. सो वी जस्ट क्रॉस इट. वी विल क्रॉस इट. दिस इज सिमेट्रिकल. ओके. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द फोर्थ वन, द बेल, राइट? बेल यू कैन सी हम इसको एग्जैक्टली यहाँ पे हाफ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल. एंड दिस इज ऑल्सो मेकिंग टू लाइन ऑफ सिमेट्री. So you need to color second one and fourth. Second और fourth को आपको draw. You can draw the line of symmetry if you want and you need to color. But question में क्या बोल रहा है? सिर्फ color करने को. So you can just color it. Second and fourth. Color it, students. Now after that we have to do question number B. That is draw the line of symmetry. अब हमें क्या करना है? We need to draw the line of symmetry. So question 2 में यहाँ पे कलर करना है, ठीक है? यहाँ पे भी कलर करना है of your choice. Color it. And 3 और 4 में कलर, अरे here 1 and 3 में कलर नहीं होगा. Clear? Is it clear to all? Okay. So now let's do the question B.
क्वेश्चन बी में क्या बोल रहा है, वी नीड टू ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री। कैसे ड्रॉ करते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, हमें जो भी इमेज दिया उसको इक्वल हाफ करना है। सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे एक ऐसे बना हुआ है एंड दिस इज वन मोर पॉइंटेड, ठीक है, स्लोप। सो ऐसे बने हैं, तो अगर हम इनको चाहें तो यहाँ अगर बीच से हम इसको स्केल रख के पेंसिल से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यूज पेंसिल and use scale. Nobody will use pen, right? So you have to just draw like this. Clear? This will be your line of symmetry. Now in the alphabet K, हम इसको किस तरह से डिवाइड करें? अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे डिवाइड करते हैं तो no, it won't be. So let's do it like this. Now they both are exactly same. अगर हम इसको fold करेंगे, it will be exactly same. Overlap करेंगे, right? Now if we talk about the aeroplane, so कैसे हम इसको equal half कर सकते हैं? If we do like this, is it equal half? No, it's not. So what we need to do? We need to do properly. So we will be doing like this. Just make the line of symmetry like this, right? Use scale and pencil and do it. Now fourth one. Here also we need to, if we do like this, is it equal half? No. So what we need to do? We need to do the way we have done in aeroplane. So let's do it. Now we have done question number A and B in book, right? So today we have done warm up exercise. Tomorrow we will be doing the exercise 7.1. Okay, 7.1 we will be doing, and the about pattern also you will be studying. All right, so for today this much is only the work, so complete this. Students, I hope that you have understood what is symmetry and you know how to draw the symmetrical line, right? Line of symmetry. So complete your notebook work and book work of today. Okay, bye bye, take care, have a nice day. Now one more thing, let me clear you out. You must be thinking कि मैम ने ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ा दिया है, but she has not taken test, so don't worry. After completing the shapes and pattern, I will be doing the enrichment activity of geometrical chapter and geometry and shapes and pattern both, and after that we will be having the test. So next week test होगा, इस week नहीं, next week आपका test होगा दोनों chapter का साथ में, geometry and this shapes and pattern. So keep on practicing. Okay, bye bye, tata, take care.